Welcome again to Androidiya. In today's video, I'm going to talk about how to use less data or use less network on Instagram. So you're watching some videos on Instagram or watching reels, for example, Binance reels or anything like that, and you're losing a lot of data. So what you're going to do? Go to go to your profile, then these three lines, click on it, in settings. From settings, go to account. From account, go to mobile data user. When you click on that, some of you guys, for those who has another types of galaxies, so you can see rather than mobile consular, something like that, just click on mobile data use or consular list data. So use list data. If it's check it or click on it, tap the use list data. So after that, if you use data, it will use so less data or so less network on Instagram. Let me say it again. जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो उसके ज़्यादा डाटा और ज़्यादा इंटरनेट ख़त्म होता है, तो उससे क्या करना पड़ता है? गाइस, क्या आप भी अपने मोबाइल पे रील्स देखते हैं और आपका उसी पे पूरा डेटा खत्म हो जाता है? तो मैं आपको सिर्फ एक सेटिंग बताऊंगा, जिसके बाद चाहे पूरा दिन आप रील्स देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका डेटा कभी खत्म नहीं होगा। बस आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ओपन करके यहाँ 3 डॉट पे टैप करना है, सेटिंग के ऊपर टैप करिए, अकाउंट पे टैप करेंगे एंड सेलुलर डेटा यूसेज पे टैप करिए। इसके बाद डेटा सेवर को एक्टिवेट करिए। नेक्स्ट टाइम कोई भी रील्स देखिए, आपका डेटा कभी खत्म नहीं होगा। गाइस, क्या आप